लेट अस नाउ टॉक अबाउट द डंपिंग और डिस्पोजल ऑफ द रेडियोएक्टिव वेस्ट कि रेडियोएक्टिव वेस्ट को हमने जो है डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। ठीक है, सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द डिस्पोजल की डिफरेंट वेस्ट को कैसे कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, सो यू नीड टू हैव ए आइडिया ऑफ की नेचर ऑफ उस पर्टिकुलर वेस्ट का कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑलरेडी नो कि जो रेडियोएक्टिव वेस्ट है इट कंटेन्स मेनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स विच आर हैविंग लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ का मतलब है दे आर हैविंग लॉन्ग हाफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि when you have disposed it off, जो आपकी रेडिएशन इट विल कीप ऑन रिलीजिंग द रेडिएशन फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो दैट मीन्स व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड कि जब भी हम रेडियोएक्टिव वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करें, सो वी शुड हैव इन माइंड दैट नॉट ओनली जो आपकी प्रेजेंट जनरेशन है उनको तो हमने जो प्रोटेक्ट करना ही है, जो एनवायरमेंट है आपका उसको तो प्रोटेक्ट करना ही है, साथ में वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल यू हैव डिस्पोज्ड इट ऑफ बट नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि आपका जो है इट विल कीप ऑन रिलीजिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन इन फ्यूचर ऑल्सो। तो वो क्या कर सकता है, आपको फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट कर सकता है अगर आपकी जो फैसिलिटी है, जो स्टोरेज फैसिलिटी है जहां पर आपने रेडियोएक्टिव वेस्ट को स्टोर किया है वो प्रॉपर नहीं है। सो दैट इज द वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन, जो आपको ध्यान रखनी है। एंड द सेकंड पॉइंट इज वी आल्सो नीड टू नो कि जब भी हम डिस्पोज ऑफ करें रेडियोएक्टिव वेस्ट को तो कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं दैट वी नीड टू फॉलो, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल यू नीड टू, सबसे जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि वी नीड टू मिनिमाइज द रेडियोएक्टिव वेस्ट। जहां जहां पॉसिबल है कम से कम जो है रेडियोएक्टिव वेस्ट जो है उस प्रोसेस में जनरेट हो, राइट। तो एक तो गया आपका कम से कम जो है रेडियोएक्टिव वेस्ट जनरेट हो गए। अगर जनरेट हो भी गया सो वी हैव टू लुक फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसाइकलिंग, ये कहां कहां हम जो है उस रेडियोएक्टिव वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं। सी, अगर हम रिसाइकल कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है कि आपका जो फाइनल जो वेस्ट प्रोडक्ट आएगा उसमें जो है आपका जो रेडियोएक्टिविटी लेवल उसका क्या हो, कम हो। सो दैट इज अनदर पॉइंट दैट यू नीड टू सी। एंड वन मोर पॉइंट दैट यू नीड टू लुक फॉर इज दैट एवरी जो भी डिस्पोज ऑफ हो रहा है आपका मटेरियल दैट मस्ट एडियर टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द नेशनल अथॉरिटी। सी, हर एक कंट्री की अपनी अपनी गाइडलाइंस बनाई हैं कि दैट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड जब आप प्लान करो उस रेडियोएक्टिव वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। सो एक कुछ एक दो तीन जनरल प्रिंसिपल्स हैं दैट यू मस्ट हैव आइडिया और रादर यू शुड बी हैविंग इन माइंड व्हेन यू आर प्लानिंग टू डिस्पोज ऑफ दैट रेडियोएक्टिव वेस्ट। Let me now discuss the different techniques that we use for the disposal of the radioactive waste. So just have a look over here. ये तीन टेक्निक्स हैं जो जनरली हम यूज करते हैं रेडियोएक्टिव वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। As you can just see, first one is like delay and decay, second one is concentrate and contain, and third one is dilute and disperse. When you talk about the डिले एंड डिके, नॉर्मली ऐसा रेडियोएक्टिव वेस्ट जिसका जो हाफ लाइफ काफी शॉर्ट है उस केस में हम इस तरह की प्रोसेस यूज करते हैं। तो नॉर्मली इस केस में व्हाट विल डू, जहां पर दैट पर्टिकुलर वेस्ट इज गेटिंग जनरेटेड तो वी विल जनरेट ए स्टोरेज फैसिलिटी ओवर देयर। सो उस स्टोरेज फैसिलिटी में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव वेस्ट को विल पुट इट अप ओवर देयर, सो एंड विल अलाउ इट टू डिके फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, right? So what we did is we delayed and decayed, allowed it to decay for a certain duration of time. तो क्योंकि हाफ लाइफ कम है तो once it got delayed तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको रिलीज कर सकते हैं जब आपका जो है उसका डिके कंप्लीट हो गया। तो सो उन केसेस में जहां आपका शॉर्ट हाफ लाइफ है तो उस केस में वी कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ डिले एंड डिके। सो यू आर डिलेइंग इट, दैट इज allowing it to store temporarily for a certain duration time, and in that duration क्या हो रहा है, उस particular radioactive waste का क्या हो रहा है, decay हो रहा है, and then once it has decayed to a acceptable limits तो उसके बाद हम क्या करते हैं, simply dispose of कर सकते हैं। Same way you are having one more method called as concentrate and contain. You can get the idea from the word itself. For example, concentrate and contain. Concentrate का मतलब है कि आपका जो है वो you have to reduce the volume. आपका larger volume है उसको क्या करो, आप reduce कर दो उस volume को, उस particular waste का। And contain. Contain मतलब उसको confine करना है, एक जगह में कहीं restrict करना उसको। So normally जहां पर आपका radioactive waste जिसकी half life बहुत ज्यादा है, it may take for example hundreds of years or thousands of years for that particular वेस्ट टू गेट डिके। सो उस केस में उसके लिए हम जो है वो फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, टेम्परेरी फैसिलिटी जो है सरफेस के ऊपर क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क्रिएट कर भी ली तो उसके बाद उसको मॉनिटर करना फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इज वेरी डिफिकल्ट। आपको नहीं पता कि 100 साल बाद क्या सिचुएशन होगी, और सरफेस के ऊपर अगर वो मान लिया मटेरियल आपने स्टोर किया है तो वो कितना जो है सेफ रहेगा। तो
उस केस में हमारे पास कोई जो ऑप्शन बचती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस रेडियो एक्टिव वेस्ट को क्या करते हैं, कन्फाइन करते हैं, मतलब मींस कंसंट्रेट करते हैं, उसको वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं, कंटेनर्स में डालते हैं, एंड देन व्हाट विल डू, एंड देन कन्फाइन इट, या तो हम क्या करते हैं सरफेस के नीचे अंडरग्राउंड उसको क्या करते हैं, कन्फाइन कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो है मॉनिटरिंग लेवल कम हो जाएगा, और ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप बोल सकते हो दैट इज ए रिलेटिवली सेफर मेथड। सो इन दोस केसेस वी कैन गो फॉर द कॉन्सेंट्रेट एंड कंटेन मेथड ऑफ लाइक डिस्पोजल। एक और टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं called as dilute and disperse, as again name suggests, dilute का मतलब concentration को कम करना, and then उसको एक एनवायरमेंट में लार्जर एरिया में जो है उसको स्प्रेड आउट कर देना। तो उससे क्या होगा, वंस आपने उसकी कंसंट्रेशन की कम कर दी, डाइल्यूट कर दिया, एंड देन व्हेन यू आर डिस्पर्सिंग इन द एनवायरमेंट प्रोवाइडेड कि उसका इंपैक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड कॉल्ड एज डाइल्यूट एंड डिस्पर्स। सी यू हैव टू सी कि कौन सा मेथड जो है आपने यूज करना है केस बाय केस। इस केस में डाइल्यूट एंड डिस्पर्स में भी यू हैव टू सी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैसे हैं, कि उनका रेडियो एक्टिविटी लेवल बहुत ही कम है, और जो एरिया जहां पर आप उसको क्या कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, अगर वो क्या कर रहे हो, आप डाइल्यूट करके उसको डिस्पर्स कर भी रहे हो, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में उसका डैमेज इज वेरी स्मॉल एंड दैट इज एक्सेप्टेबल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो वहां पर आप क्या कर सकते हो, इस तरह का जो है मेथड जो है अडॉप्ट कर सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट दैट यू आर हैविंग, एनी ऑफ दीज 3 प्रोसेसेस दैट यू कैन चूज। Now, what I will do is, मैं आपसे जो है वो, because you already know, we have already discussed about the different types of radioactive waste. So one by one, I'm going to discuss about those waste कि उनको हमने डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। Let us now talk about the disposal of the high level radioactive waste. सी किसी भी रेडियो एक्टिव वेस्ट को जब आप डिस्पोज ऑफ करोगे, तो सबसे पहले आपको जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर वेस्ट के। एज यू ऑलरेडी नो, हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट के 3 चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज कि जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस टाइप ऑफ वेस्ट, एंड द सेकंड वन इज कि जो हाफ लाइफ है जो रेडियो आइसोटोप्स उस पर्टिकुलर वेस्ट में है उनकी वो बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम द रेडियो एक्टिविटी लेवल इज क्वाइट हाई। सो इन तीनों पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है जब भी हम जो है डिस्पोजल की बात करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं इस केस में, दैट इज द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। तो जब मैं उसको डिस्पोज ऑफ करूं, इसका मतलब ये है कि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कूल डाउन करना पड़ेगा, राइट, बिफोर परमानेंटली डिस्पोजिंग इट ऑफ। सो नॉर्मली व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट को कंटेनर्स में डालते हैं, एंड देन इट इज टेकन टू द स्पेंट फ्यूल पूल। बेसिकली एक वाटर की फैसिलिटी है जिसमें वहां जाके हम उन कंटेनर्स को रख देते हैं, सो दैट, एंड वहां पर रख के हमें वी अलाउ इट टू कूल डाउन फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेट अस से 8 to 10 years। सो इस पीरियड में क्या होता है, वो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो कूल डाउन हो जाता है, और उसके बाद व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैंडल इट एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ए सर्टेन फैसिलिटी। नाउ जो 2 रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको व्हेन वी टॉक अबाउट देम, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी फैसिलिटी चूज करनी पड़ेगी जहां पर वो दोनों पॉइंट टेकन केयर, दे आर टेकन केयर अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि आपका जो रेडियो एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा है, तो जब हम डिस्पोज ऑफ करें तो आपका ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहां से आपका जो है रेडिएशन जो है बाहर रिलीज ना हो, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी लेवल जो है ज्यादा है। सेम टाइम हमने कहा कि आपका जो हाफ लाइफ है वो बहुत, इट्स क्वाइट लॉन्ग। इसका मतलब है वो फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्पोजल ऑफ द हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट, हम इसको क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं एट ए फैसिलिटी डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस, रफली अबाउट 300 मीटर्स टू 1000 मीटर। सो इतनी डेप्थ पे जाके हम क्या करते हैं, जो आपके कंटेनर्स हैं फ्यूल के, नॉट फ्यूल के, दैट इज दिस वेस्ट के, वहां पर जाके उसको बरी कर देते हैं। सो उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल इतनी डेप्थ पे जब भी अगर रेडियो एक्टिविटी लेवल हाई है तो रेडिएशंस इजीली जो है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर आ नहीं पाएंगे। सेकंड, जब हम सेफ्टी की बात करें तो इट इज सिक्योर फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्यों? फॉर एग्जांपल लेट अस से सरफेस ऑफ द अर्थ के आसपास अगर कोई सिचुएशन एग्जिस्ट करती भी है, वेदर इट इज मैन मेड और नेचुरल की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर सिचुएशन एग्जिस्ट कर जाती है, लेट अस से अर्थक्वेक आ जाता है, लेट अस से सुनामी आ गई, और मे बी साइक्लोन आ गया, और एनी नेचुरल क्लैमिटी अगर एग्जिस्ट करती है, तो ये जो है इट विल नॉट गेट डैमेज इजिली, राइट। एट द सेम टाइम मैन मेड की बात करें, लेट अस से वॉर हो गया, सो उस सिचुएशन में जो है वो, क्योंकि फैसिलिटी आपकी बहुत नीचे है, तो देयर इज ए वेरी स्मॉल चांसेस ऑफ गेटिंग वो फैसिलिटी जो है वो डैमेज हो। सो दैट वे आपका जो ये फैसिलिटी होगी दैट विल बी सेफ फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्पोज ऑफ द
हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो सिंपल टर्म में व्हाट वी विल डू, पहले हम क्या करेंगे, जो हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो जनरेट हुआ, उसको क्या करेंगे, कूल डाउन करने के लिए स्पेंट फ्यूल फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, जहां पर वो जनरेट हुआ वहां पर कूल डाउन करेंगे फॉर 8 to 10 years एंड देन विल टेक इट टू द डीप जियोलॉजिकल फैसिलिटी बीनीथ द अर्थ सरफेस रफली अबाउट 300 to 1000 मीटर, वहां जाके उसको क्या करेंगे, हम बरी कर देंगे इन कंटेनर्स को, सो दैट इट इज सेफ फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। Let's now talk about the disposal of the intermediate level waste. As you already know, in case of intermediate level waste, it is having the radionuclides which are having long life, but जो radioactivity level है that is lower than the high level waste, but higher than the high limit of the low level radioactive waste. तो उस केस में at the same time we had talked about that heat dissipation is not the main concern in case of इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट। सो इसका मतलब है कि या तो बहुत ही लिमिटेड प्रोविजन हमें देना पड़ेगा हीट के लिए, हीट डिसिपेशन के लिए, या तो हमें हीट डिसिपेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच इन केस ऑफ इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट। सो देन रिमेनिंग पार्ट जो बचा फिर दैट इज उसका डिस्पोजल इन केस जो हमें टेक केयर करना है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ जो आपका लॉन्ग लाइफ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की उसमें, एंड जो रेडियो एक्टिविटी लेवल उसका है। सो वी विल डिस्पोज इट ऑफ इन द सिमिलर मैनर एज वी डिड इन केस ऑफ हाई लेवल वेस्ट। दैट मींस हम क्या करेंगे, वी विल बरी इट डाउन इनसाइड द अर्थ सरफेस बट नॉट at that depth as it was in case of like high level waste, but definitely a few hundred meters below the earth surface, so that उसमें जो आपका जो रेडियोएक्टिविटी लेवल है, रेडिएशंस कैन नॉट कम आउट ऑफ द दैट मींस एनवायरनमेंट में पहुंच ना सके। एट द सेम टाइम जो आपका जो सेफ्टी प्रोविजन है, बिकॉज उसकी लॉन्ग लाइफ है, दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। Let us now talk about the low level radioactive waste. As you already know, the level of radioactivity in this particular waste is low, and also as you know the significant this particular waste contains significant amount of radioisotopes which are having short half life. So अगर हाफ लाइफ शॉर्ट है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए इफ यू हैविंग अ स्टोरेज फैसिलिटी नियर द अर्थ सरफेस यू कैन मॉनिटर इट, बिकॉज इन रफली अबाउट 10 to 50 years में वो जो मोस्ट ऑफ द जो मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा। एट द सेम टाइम सिंस द रेडियो एक्टिविटी लेवल इज लो, तो इसका मतलब ये है कि जो बैरियर आपको बनाना पड़ेगा वो बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, सिंस द रेडियो एक्टिविटी लेवल इज स्मॉल। सो दैट इज वाई जो जब हमने इसको डिस्पोज ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट ए शैलो अर्थ फॉर्मेशन, मतलब रफली अबाउट अ फ्यू मीटर्स डाउन द अर्थ सरफेस हम क्या करेंगे, उसको बरी करेंगे, तो उसको शैलो लैंडफिल्स भी बोल सकते हैं। तो हमने किया उसको कंटेनर्स में डाला और उस पर्टिकुलर शैलो फैसिलिटी में क्या किया, डंप करके उसको कवर कर दिया। सो दैट वे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिस्पोज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्ट। इस पर्टिकुलर वेस्ट को आप यू डोंट नीड ए फैसिलिटी डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जैसे आपने हाई लेवल वेस्ट में किया अंडरग्राउंड सरफेस काफी फ्यू दैट मींस हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स नीचे जो डंप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतनी डेप्थ पे जाके अगर स्टोर करते हो सो यू नीड टू लॉट ऑफ अमाउंट, दैट मींस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी उसकी, एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सिग्निफिकेंट एडवांटेज। सो सिंपली हम क्या करेंगे, उसको नियर अर्थ सरफेस फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वहां पर जाके हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंपली स्टोर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एक चीज और आप जो नोट कर सकते हो इस पर्टिकुलर वेस्ट की, सी जितना भी टोटल वेस्ट जनरेट होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है, द लो लेवल वेस्ट इज द हाइएस्ट अमंग ऑल ऑफ दैट पर्टिकुलर वेस्ट। रफली अबाउट 95% of the total waste that is generated, radioactive waste that is generated, is the low level radioactive waste. But इसकी contribution towards the amount of radioactivity उस particular waste में that is only about roughly 3 to 4%. But when you talk about the high level radioactive waste, जो हाई लेवल रेडियोएक्टिव वेस्ट है दैट इज वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, रफली अबाउट 3 to 5%, रफली अबाउट 3% यू कैन जस्ट से, इतना ही वॉल्यूम जो है जनरेट होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ रेडियोएक्टिविटी, तो उस पूरे टोटल वेस्ट का जो रेडियोएक्टिविटी लेवल है उसका इट कंट्रीब्यूट्स रफली अबाउट, दैट मींस हाई लेवल वेस्ट कंट्रीब्यूट्स रफली अबाउट 95% ऑफ दैट पर्टिकुलर radioactivity. So that is another thing that you need to keep in mind when you are, so that is why as you see in case of low level radioactivity low level waste, what we do is, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है उसका, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको उसका वॉल्यूम रिड्यूस करके उसको कंटेनर में डाल देते हैं, सो दैट इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए एंड देन नियर सरफेस फैसिलिटी में क्या करें, हम उसको डिस्पोज ऑफ कर दें।
Let us now talk about the disposal of the remaining three types of radioactive waste. One is exempt waste. So as we have already discussed, exempt means that it is exempted from the regulatory control. इसका मतलब ये हुआ कि for example, if this particular waste is generated anywhere in the facility, so अगर मुझे लगता है कि इसमें radioactivity level बहुत ही कम है, तो simply what I need to do is I need to take permission of the from the regulatory authority that okay, radioactivity level is very low, so it can be exempted from the. So normally what is done is once that regulatory authority gives the clearance, okay, then it is considered as a नॉर्मल वेस्ट कि इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम, तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको क्या करेगी, कंट्रोल नहीं करेगी या हमें जो है उसको जो है मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ एग्जम्प्ट वेस्ट. At the same time, when we talk about the very low level radioactive waste, we had talked about it also that जो radioactivity level है that is also very low, but it is higher than the exempt waste. तो इसका मतलब ये हुआ कि small amount of एक limited amount of regulatory control चाहिए. इसका मतलब ये है कि for example, let us say मैं इसको dispose of करना है, तो कहां पर करना है, okay, क्योंकि मुझे जो बहुत ज्यादा high level of containment या isolation नहीं चाहिए, पर थोड़ी बहुत चाहिए. Okay, let us say if I say that okay, this is the area, you just simply dump it over there. So that means you are monitoring it. You are saying okay, this is the area where you need to keep it and just have a watch in that particular waste. So that is the meaning of disposal of this low level radioactive waste. And the final one is you are having very short lived radioactive waste. So you know, already know it about it, is that it is having the radioactive elements which are having very short half lives. So normally what we do is जहां पर वो waste generate हुआ वहीं पे हम क्या करेंगे, facility create करेंगे और we will allow it to decay for a few weeks or a few years, and once it has decayed, क्योंकि short life बहुत कम है उन radioactive elements की, तो once it has decayed, then we will just then once it has completely decayed, then we can just dispose it off as a normal waste. So this is the method that is followed in these remaining three types of radioactive waste when we talk about the disposal methods. Regarding the disposal of the radioactive waste, there was one development in 1990s called as Panacea Proposals. Panacea Proposal was basically the proposal given by a company called as Panacea Resource Australian Private Limited. And as per this company, they researched a lot of areas across the continent or across the different continents, and they found that there are few areas across the earth which are relatively stable geologically. Relatively stable geological means for many years, for millions of years, these areas have not got, they are not geologically disturbed. They have not got geologically disturbed, and there is possibility that in future also these areas will remain relatively stable. So, and they identified a few areas. For example, they identified Australia, they identified like China, Western China particularly, then like Argentina in like Southern America, and then one was like South Africa, that is southern portion of Africa. So these were the few areas which they identified, and they said that if we deposit the radioactive waste in these areas deep inside the Earth's surface, then there is great possibility that these radioactive waste will remain safer in these areas because there is less possibility of disturbance in these areas. So, and above all these areas, they found Australia to be the most favored nation that way. That is, this is highly stable geologically, as well as economically and also politically that country is more stable. So that is why they proposed this to be the best destination for the depositing of this particular waste deep inside the Earth's surface. But as you can just think of, any country is not going to accept this kind of proposal, because why should I accept, as a country, accept the waste, that too highly radioactive waste of other countries? The same happened with this proposal also. Australian government had a hostile reaction about these proposals, and finally this Panacea had to drop those proposals. So that is all that you need to know about the Panacea proposals. From the exam point of view, at least you need to have idea what was Panacea and what was Panacea proposal related to. Let me discuss with you a few questions based upon whatever we have discussed in this video and previous video also. Just have a look in this question. I'm just reading it out to you. Consider the following statements. You have been given 3 statements, right? And just go through these statements and then try to find out the answer. What I will do is I will just read
each option and we'll try to find out whether that particular statement is correct or not. First option is beta particles are charged particles. As you know, beta decay, whenever the beta decay takes place, beta decay can take place in the form of like beta minus decay or beta plus decay. So in case of beta minus decay, as you know, electron is emitted, and when it is a beta plus decay, in that case positron is emitted, and both of these electron and positron, they are charged particles, right? So that is why beta particles are the charged particles. So this statement is going to be the correct. Second statement is gamma radiations are composed of charged particles. You already know radiations are of two types. Like for example, you are having like this particle radiations as well as photon radiations in the form of photons. So basically alpha and beta, they are the particle radiations, but gamma, they are not the particle radiation. Gamma rays, they are the photon radiations. So this statement is not correct. See the last statement, that is both alpha and beta particles have an electric charge and mass. So since you already know in beta decay, this electron and positron are emitted, so they are having mass and this charge, electric charge. So this statement is correct. So the correct answer is going to be the option C, that is statement 1 and 3 are correct. Here is another question, just have a look. Again, it is on the similar lines, like consider the following statements about the spent fuel. Three statements are given and you are supposed to tell which one of these is or are correct, right? Just try to answer, then I will discuss with you. If you see the statement 1, it consists of long-lived radionuclides only, right? So this statement C is not correct in the sense, okay, spent fuel definitely consists of long-lived radionuclides, but significant amount of long-lived radionuclides. It means there is possibility that there are other radionuclides which are having small life also, but their proportion is relatively small. That means this statement 1 is not correct. See the second statement. Significant amount of heat is generated by the waste material. As you know, spent fuel is having the residual heat. And before disposing it off, if we are directly thinking of disposing it off, then we have to cool it. So definitely that means this statement is going to be the correct. It consists significant amount of heat. Residual heat जो है उसमें significant होती है. The third one is spent fuel cannot be reprocessed as it is a radioactive waste. See, we have already seen spent fuel को या तो हम directly dispose of भी कर सकते हैं, as well as if there is any possibility that exists, then we can also reprocess it to extract the elements like plutonium or other elements, जिनको हम दोबारा जो है we can make use of them for the generation of fuel and then electricity, right? So it means that it cannot be processed. I mean definitely it can be processed, right? It can be, अगर आप चाहो तो इसको reprocess कर सकते हो. So that way this statement 3 is going to be the incorrect. So only option correct in this case is the option B, that is 2 only. Let us now discuss one more question. This question I have taken from Engineering Services 2018. Just have a look over here. The question is, consider the following characteristics with respect to the alpha particles. 4 statements दी हैं and you are supposed to tell which one of these statements are correct. Or if you can see the options, only 2 statements can be correct. So let us discuss these statements one by one. The first statement is, they have large specific ionization value. So सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आयनाइजेशन क्या है. आयनाइजेशन सिंपली प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड चार्ज, राइट? अगर कोई एटम जो है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करे या नेगेटिव चार्ज एक्वायर करे तो उसको हमने नाम दे दिया, वी हैव गिवन इट अ नेम कॉल्ड एज आयनाइजेशन. सो फॉर एग्जांपल लेट अस से अगर an atom if it gives up an electron, तो obviously we say that it is a positively charged ion. और अगर वही एटम लेट अस से अगर एटम जो है if it acquires an electron, तो उस केस में हम बोल रहे हैं it is a negatively charged ion. But the term that is used over here is the specific ionization. See, specific ionization को simple term में समझने के लिए let us see, अगर let us say कोई पार्टिकल जो है किसी मीडियम से पास हो रहा है और एक सर्टेन डिस्टेंस जब वो ट्रेवल करता है तो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने पर वो सराउंडिंग के कितने पार्टिकल्स को आयनाइज करता है. So that is represented with the help of the specific ionization. तो फॉर एग्जाम्पल फॉर ए गिवन डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस अगर वो पार्टिकल लार्जर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आयनाइज करता है तो हम बोलेंगे उसकी जो
स्पेसिफिक आयनाइजेशन है वो क्या है, लार्ज है। अगर वो स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आयनाइज करता है फॉर द गिवन डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल, तो उस केस में हम बोलेंगे इसकी जो स्पेसिफिक आयनाइजेशन क्या है, स्मॉलर है, राइट। नाउ वी हैव टू सी विद रिस्पेक्ट टू द अल्फा पार्टिकल्स। To understand with respect to the alpha particle, first you need to know the properties of the alpha particle. See, alpha particles, as you know, it consists of 2 protons and 2 neutrons. So it means the size or the mass of this particular alpha particle is large. At the same time, क्योंकि 2 प्रोटॉन है वहां पर, इसका मतलब जो उसका जो चार्ज है वो भी क्या है, ज्यादा है। It's having a large charge. So see, when an alpha particle is emitted, तो what happens is, since its mass is large, so उसकी जो travel speed होगी वो क्या होगी, कम होगी, speed कम होगी, but since charge is larger, तो when it is traveling through a particular medium, so it will try to interact with larger number of atoms or particles, so that it means it will ionize larger number of atoms, क्योंकि इसकी speed कम है और charge ज्यादा है। So that it means जो इसकी स्पेसिफिक आयनाइजेशन होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। So it means the statement 1 जो दी गई है, they have large specific ionization value, this statement is correct. Now अगर इसकी स्पेसिफिक आयनाइजेशन ज्यादा है, it means it will interact with larger number of particles और larger number of particles को ionize करेगा। So इसका मतलब है कि it will give up its energy at a faster pace, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस में ये लार्जर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लार्जर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आयनाइज कर रहा है, तो इसकी जो एनर्जी डिसिपेशन होगी वो क्या होगी, एक फास्टर पेस में होगी। तो अगर एनर्जी डिसिपेशन फास्टर पेस पे होगी तो ऑब्वियसली द फाइनल डिस्टेंस दैट इट कैन ट्रेवल विल बी स्मॉलर। सो दैट मींस उस मीडियम में इस पार्टिकल की जो पेनिट्रेशन पावर होगी वो क्या होगी, स्मॉलर होगी। सो इट मींस इसका, सो नाउ लेट अस सी द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स। they dissipate their energy rather slowly, so we have already discussed। तो इसका मतलब है they dissipate the energy at a faster pace। if you see the third statement, they can penetrate the outer layer of human skin। so we have already discussed कि जो penetrating power है alpha particles की, that is very small, right? In terms of energy dissipation also we have seen, so they can be, even these particles can be blocked by the outer layers of the human skin, so this statement is not correct। they can penetrate the outer layer of the human skin, so it is not, they cannot penetrate even the outer layers of human skin। and let's see the fourth statement, their emitters are heavy elements। see, we have already discussed during the radioactive decay, जो आपके you are having these radioactive elements हैं जिनका आपका those who are having particularly like heavy elements like uranium, उनका radioactive decay जब होता है तो they release the particles like alpha particles, right? so that way this statement is correct। so only out of all these 4 statements, statement 1 and 4 is correct, then remaining, that is 2 and 3 are not correct, so correct option will be A।